This is a lecture number कौन सा है 19 topics in algebra. So today we will start the second section of the course, which is based on the module theory. So actually module is a you can say that module is a generalization of a vector space in a sense, or you can say that vector space is a special case of a module. So for example, we know that what is a field. So we know that what is a field, and field actually, and there are some examples of field that it could be R, C, Q, and there are also some finite fields, for example CP. So these are fields. So actually whenever we have a field, let's say K, whenever we have a field K, so we can say that a field is a special case of a ring. So every field is a ring, but every ring is not a field. So we know that a field is a commutative ring with unity plus non-zero element is a element. Non-zero element is a unit. So actually the third property is an important property, because in this course we are assuming that all rings are commutative rings with unity. So first two properties, so तकरीबन जितने भी रिंग्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो होल्ड करेगा. सो कौन सी चीज? सो एक्चुअली द प्रॉपर्टी 3 इज मेकिंग द कॉम्यूटेटिव रिंग अ फील्ड. सो अब तो ये एक थर्ड प्रॉपर्टी होती है. अब फील्ड के ऊपर, यानी कि इसका मतलब अगर मैं इस वाली प्रॉपर्टी को कंसिडर ना कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने डिस्कशन में इस वाली प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब मैं एक रिंग को सिर्फ कंसिडर कर रहा हूँ. अब what is the concept of a vector space? How can we define a vector space? A set, यानी कि आप ये बात कहते हैं that actually complete satisfies हम एग्जाम में अगर देखें, जब आप किसी चीज को स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पहले सेट लेते हैं और उसके ऊपर ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, फिर एग्जाम्स आता है. तो आपने कहा कलेक्शन एक सेट है, ठीक है, आपने उसके कलेक्शन, बाद में उनको इसके एलिमेंट्स को वेक्टर्स बोलता है, बट एक सेट है उसमें ऑपरेशन डिफाइन कराता है. कौन कौन से ऑपरेशन डिफाइन कराता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो एक्चुअली a vector space is not to define a vector space you need a field. You need to define a vector space over a field. So scalar multiplication, though we will say that this is scalar multiplication, और यहाँ पे मैं k लिख रहा हूँ. इस k का मतलब है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड की. जब भी आप वेक्टर स्पेस को डिफाइन करवाते हैं, so you need an addition on V, and also you need a scalar multiplication on V with respect to. स्केलर का मतलब ये होता है कि अल्फा अगर k से बिलोंग करे, V अगर V से बिलोंग करे, तो अल्फा डॉट V किससे बिलोंग करेगा? ये भी V से. So this is a scalar multiplication. So we know that first we need two operations, addition and scalar multiplication. So addition is an internal operation, or you can say it is a binary operation on V, and the another operation is a scalar multiplication. So and all scalars. So what is the main thing? That all scalars here, all scalars are coming from a field K. All scalars are coming from a field K. Now what is the what is the point? That if we replace this field K by an arbitrary commutative ring with unity, or by a commutative ring with unity, for example Z से replace कर दें, यानी कि अब choices बढ़ गई है ना, क्योंकि commutative ring से replace करेंगे तो ज़्यादा choices हो गए. Z से replace कर दें, Z4 से replace कर दें, which is not a field. So if we replace this field by a commutative ring R, and then again we define a scalar multiplication, and जो सारे axioms हैं वो वेक्टर स्पेस की तरह होल्ड हो,
तो वो जो स्ट्रक्चर कहलाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं, और इट इज एन आर मॉड्यूल। जैसे ये हमारे पास वेक्टर स्पेस ओवर बी होती है, दिस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर बी, तो हम जब इसको पढ़ते हैं दैट दिस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर, दिस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर ओवर के, सॉरी, वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड, V is a vector space over a field. So if we if the set of scalars, if the set of scalars is replaced by a commutative ring with unity, then and the set under, again the set under addition and scalar multiplication, now with scalar multiplication is defined through a commutative ring, will satisfy, if this structure will satisfy some axiom, then I will say that that structure is a module, और उसको हम कहते हैं जैसे वेक्टर स्पेस ओवर की होती है हम उसको कहते हैं मॉड्यूल ओवर आर बोलते हैं। सो so you can say that actually a module is a vector space over a, इसको लोग आसानी समझने के लिए अपने जहन में ये भी रखते हैं that a module is a vector space like a structure over R, over a commutative ring R with unity, with unity भी हम लोग यानी कि कर रहे हैं। ओके, एक्सियम्स वही सारे वेक्टर स्पेस वाली सेटिस्फाई यानी कि होंगे, बट नाउ दिस टाइम स्केलर्स आर कमिंग नॉट फ्रॉम अ फील्ड, दे आर कमिंग फ्रॉम अ कॉम्यूटेटिव रिंग आर। तो स्केलर्स अब तो हम अब देखेंगे कि हम अब ये, अब जाहिर सी बात है कि पहले हमारे पास फील्ड थी तो फील्ड ज़्यादा रिच थिंग थी, अब हमने एक रिच, अब हमने जाहिर सी बात है कि अपना स्ट्रक्चर लूज कर दिया तो हमारी रिचनेस कम हो गई है। तो जैसे ही हम फील्ड से रिंग में जाएंगे तो हम देखेंगे हम कौन कौन सी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज को लूज कर रहे हैं ओवर आर पे। जब स्केलर्स पहले अगर फील्ड से आ रहे थे तो अगर अब अगर हमने फील्ड को एक ज़्यादा लूज स्ट्रक्चर से अगर हमने रिप्लेस कर दिया है तो इसका मतलब कि हमारे पास रिचनेस कुछ कम होगी, यानी कि होगी रिचनेस, अलग स्ट्रिक्टनेस कुछ कम होती है। रिचनेस अगर इस सेंस में ले रहे हैं कि उसके अंदर ज़्यादा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होते हैं तो ज़्यादा उसके अंदर काम कर सकते हैं, तो इस सेंस में रिचनेस लूज हो रही है। So that's why, so we will see this effect. तो मॉड्यूल को डिफाइन करना कोई इतने मुश्किल काम नहीं है। असल जो चीज़ है वो ये कि हम वेक्टर स्पेस के मॉडल को लेंगे, हमेशा उस तरह से मॉड्यूल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, एंड वी विल सी के दैट which properties are losing and which properties are preserving. So this is the motivation. Now I will give the formal definition. Let R be a commutative ring with unity. So an R module M is an abelian group अब वेक्टर स्पेस भी क्या होता है कि वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है, एबिलियन ग्रुप होता है। एन आर मॉड्यूल इज एन एबिलियन ग्रुप एम with respect to the addition defined on M इसको R मॉड्यूल पढ़ते हैं या मॉड्यूल या 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 मॉड्यूल ओवर R भी पढ़ते हैं या मॉड्यूल ओवर R, M इज अ, और इसको हम ऐसे भी रीड करते हैं that M is a module over R, एक ही बात, M is a module over R, दोनों चीजें रीड करते हैं। So together with a map, एक्चुअली ये जो मैप है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करा रहा है टुगेदर विद अ मैप, या बल्कि आप इस तरह से मैप इस टुगेदर विद द स्केलर मल्टीप्लिकेशन with respect to R
और स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफाइन हो रही है, दैट इफ R is an element of R and X is an element of M, then R dot X तो together with scalar multiplication dot से define हो रही है. Then R dot X is an element of M. So this is the scalar multiplication. So M is already like a vector space. M is already an abelian group with respect to addition, and now we are defining scalar multiplication with respect to the ring R, and it will satisfy the following condition like a vector space. जो vector space की और इसके with respect to scalar multiplication जो properties होती हैं, satisfying the following conditions. So vector space की just हमें पता है कि let's say if we multiply a scalar, if R is an element of R and X of Y is an element of M, then R dot X plus Y, it is equal to R dot X plus R dot Y. Number two thing, that if R and S is an element of R and X is an element of M, then R plus S. So now I am adding elements of ring with respect to the addition of ring. So it is equal to R dot X plus S dot X. And number three, that for R and S in R and X in M, so if we multiply X S dash with X and then take the scalar multiplication of R with the element, so it is equivalent to say that multiply R with S with respect to the multiplication of ring and then take the scalar multiplication in X. And since we are assuming that R is a commutative ring with unity, so if one is an element of R and X is an element of M, so 1 dot X, it is an element of is an element, it is equal to X. So again, all these properties are also satisfied by a vector space, but now this time the scalar multiplication is defined through a ring or with respect to a ring. And again, if these properties are satisfied with respect to the scalar multiplication defined by a ring, so we will say that M is an R module or a module over R, or M is a module over R. Or we know कि जो abelian group की conditions with respect to, so जो conditions होती हैं with respect to addition, वो already हम लोग को मालूम है. शायद तो आप लोग यहाँ पे इसको याद भी कर सकते हैं कि जब मैं abelian group कहूँ with respect to addition, so what is the meaning of this thing, that associative property hold करेगी, associative property hold करेगी that x plus y plus z, it is equal to x plus y plus z for all x, y and z in M. 0 is an element of M, so you get x plus 0, it is equal to x. For x in M, minus x replace करेगा, so that x plus minus x, it is equal to 0. And the fourth thing, that x plus y, it is equal to y plus x. So these two properties होती हैं, because we are assuming that M is an abelian group with respect to addition. So this is the formal definition of a module, which is not very difficult to understand क्योंकि आपने vector space को understand किया. So ये हमारी technique रहेगी that whenever we will try to understand a module or a definition of a module, तो vector space is a special case of a module. तो मॉड्यूल की जो पहली एग्जांपल है वो वेक्टर स्पेस ही है, दैट एवरी वेक्टर स्पेस इज अ मॉड्यूल. व्हाई? बिकॉज एवरी फील्ड इज अ रिंग. तो अगर हर फील्ड रिंग है तो इसका मतलब हर वेक्टर स्पेस एक मॉड्यूल है. तो एग्जांपल 1 क्या है, दैट अ वेक्टर स्पेस V ओवर अ फील्ड K
is a module over K, or we will say that is V is a K module. So हम क्या पढ़ेंगे that V is a K module. अगर एक ही बात है कि V is a module over K और V is a K module. So मॉड्यूल जितने भी वेक्टर स्पेसेस हैं वो मॉड्यूल्स की एग्जांपल्स हैं. ओके, तो ये सबसे तो इसका मतलब मॉड्यूल्स के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमेशा हम वेक्टर स्पेस को एग्जांपल के तौर ट्रीट कर सकते हैं, बट सिर्फ वेक्टर स्पेसेस को नहीं लेंगे, बिकॉज अर्लियर आई सेड दैट प्रॉपर्टीज विल लूज इन द केस ऑफ आई जर्नल मॉड्यूल. प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस के हर वो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो मॉड्यूल्स के केस में होल्ड नहीं करेंगे वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज. ओके, so now example number 2, which example देखेंगे. Okay, so let G be an abelian group G be an abelian group with respect to addition, with respect to some addition. कोई सी भी addition के लिहाज से G एक abelian group है. अच्छा, वेक्टर स्पेस की एग्जांपल में जैसे यहाँ पे रिमार्क इनके लिख दूं कि फॉर एग्जांपल Rn over R, ये इसकी एग्जांपल हो सकती है कि यूक्लिडियन स्पेस ओवर R क्या बनाती है, वेक्टर स्पेस होती है. तो दिस इज एन एग्जांपल. इसी तरह वी नो के जो C होते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ओवर R, दैट इज we can say that C is an R module. That is C को भी हम R module कह सकते हैं. That is C is an R module. कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो वेक्टर स्पेस होती है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर के ऊपर बना रहा है, क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म कर देता है. तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स इसकी हो सकती है. और भी ले सकते हैं, जैसे मैट्रिसेस की ले सकते हैं या पॉलीनॉमियल्स की ले सकते हैं. कोई भी वेक्टर स्पेस एग्जांपल हो सकती है मॉड्यूल की. So next example हमारे पास कहाँ से आ रही है कि that for example that G be an abelian group with respect to addition. Then define a scalar multiplication or you can say that for R it is equal to Z. We always define a scalar multiplication on G with respect to Z. For R is equal to 3, define a scalar multiplication in the following way. और वो क्या वे है? Define that K, for example, if N is an element of C and X is an element of M, तो definition क्या होगी? That N dot X का मतलब क्या होगा कि that we will add, अच्छा N if sorry, this is an element of G. So we are assuming that G is an abelian group. तो इसका मतलब G के अपने एलिमेंट्स के दरमियान तो एडिशन डिफाइन करवा सकता हूँ. Since this is our assumption that G is an abelian group with respect to addition, so that's why we can add any two elements of G. In fact, whenever I will take an element of G, so I can add that element with itself many times. Okay, so that's why N dot X को मैं कैसे define करा रहा हूँ? It is the addition of X n times. It's the addition of X n times. And now, since addition is a well-defined operation on G, so that's why it is an element of G. So scalar multiplication is defined in this way, that a scalar X on X on an element of G, or multiply a scalar which is an integer, it is multiplied with G in this way, that N dot X is equal to X plus X plus X n times. So actually G is an so G is a module. So G is a module. Abelian group तो ये था. Now you can verify that G is a module
over z with respect to the scalar with respect to the scalar multiplication. You can verify ना, सारी properties verify हो जाएंगी with respect to the scalar multiplication defined above. So what is the conclusion? That any abelian group, क्योंकि हमने start किससे लिया था, we started from an abelian group with respect to addition, and we proved that that abelian group is always considered as a module over Z. So what is the conclusion? That any abelian group G would be considered as a vector space, or could be considered as a Z module, as a module over Z, or as a Z module. जी भी लिखने की जरूरत नहीं. Any abelian group could be considered as कि हर abelian group को आप हमेशा एक Z module structure provide कर सकते हैं. Or you can always put a Z module structure on an abelian group. Okay, third example number 3. सर इसमें जो है वो G का जो है वो Z का सबसेट होना जरूरी है. Sorry? सर इसमें G जो है is G a subspace of Z is an arbitrary subgroup of Z. Subgroup of Z. Arbitrary abelian group है. इसकी चले मैं एग्जांपल दे देता हूँ. इसकी मैं एग्जांपल चले कुछ क्लियर कर देता हूँ. सपोज क्या होगा, कब पूरे सेमेस्टर में वहां पे क्लास हो रही है. For example, Zn is an abelian group. We know that Zn is an abelian group. तो उसका सबसेट तो मैंने कहीं नहीं लिखा, मैंने बस G को लिखा है कि G एक आर्बिट्री एक abelian group है with respect to addition में. तो G को Z का सबसेट होना जरूरी नहीं है. For example, Z is an abelian group with respect to modulo and addition. So now what we can say that according to the above theory, that Zn with respect to the modulo and addition, and अब आप ये कहते हैं कि इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, आप इसको बल्कि आप इस कुछ कंफ्यूजन है तो आप इस मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे Z लिख देना. तो ये shows that it is a scalar multiplication with respect to Z. So with respect to addition and this integer multiplication, it is a Z module. So Zn is a Z module. So Zn को अब आप Z module के ऊपर कंसिडर कर सकते हैं. It's a Z module. Okay, तो Zn तो सबसेट नहीं है C का. In the same way, let's say और भी किसी आप मैट्रिसेस को इनके आप मिलके पॉलीमर रिंग को ले लें. हम पॉलीमर रिंग को स्टडी करते हैं. We know that polymer ring over R या polymer ring के लिए अभी Z ले. नहीं, ये तो सबसेट वाली चीज आ रही है ना, तो इसमें आपको वो क्या कहते हैं डिफरेंट यानी करेंगे. लेट्स से आप ये ले लें M2 क्रॉस 2 Z ले लें. We know that this is an abelian group with respect to matrix multiplication, matrix addition, sorry. Now our conclusion will imply that this M2 cross 2 Z with respect to the matrix addition and again scalar multiplication with respect to Z, this is a Z module. So in this way you can with the help of the conclusion you can construct many examples.
बिकॉज जैसे हमने हमारा पहला एग्जांपल थी दैट एनी वेक्टर स्पेस ओवर के इज अ के मॉड्यूल। सो जो भी वेक्टर स्पेस की एग्जांपल्स हैं वो के मॉड्यूल्स की एग्जांपल है। इसी तरह आप जो भी एबिलियन ग्रुप्स हैं आप हमेशा इनको सी मॉड्यूल बना सकते हैं, तो दैट्स व्हाई वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ओके यही बात भी सबसेट नहीं है ZM का, तो आपने इसको प्रूव कर दिया। नहीं, हो भी सकता है, दैट्स कुछ ऐसे एग्जांपल होते हैं जिनमें हो भी सकता है कि Z सबसेट G का हो भी सकता है। वो तो मैंने उसकी मिसाल दी थी ना, वेक्टर स्पेसेस के लिए एग्जांपल दी थी। जैसे यहाँ पे R तो Rn का सबसेट नहीं होता, मगर वो तो ये तो वेक्टर स्पेस एग्जांपल है ना, तो और आपको मालूम होना चाहिए कि C इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R, कि C को R के ऊपर वेक्टर स्पेस कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, तो और R भी फील्ड होता है। तो देखें, एक ये बात तो आपको पता होगी कि एवरी फील्ड ओवर इटसेल्फ इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस, कि अगर आप किसी भी फील्ड के को अगर आप इटसेल्फ ले लेंगे तो ये भी एक वेक्टर स्पेस ही तो बनाती है ऑलरेडी, कि अगर आप स्केलर्स यहाँ से ले तो एवरी फील्ड ओवर इटसेल्फ इज अ वेक्टर स्पेस। ये सारे वेक्टर स्पेस के एक्सिम को सेटिस्फाई करेगी। तो इधर जो फील्ड के एलिमेंट्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। सो एक्चुअली यहाँ से ये आपको मालूम होना चाहिए दैट फर्स्ट यू शुड नो दैट एवरी फील्ड के इज जैसे R ओवर R भी अपने ऊपर होता है, एवरी फील्ड ओवर के इज अ वेक्टर स्पेस ओवर के इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। और इस केस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, जैसे जो फील्ड के एलिमेंट की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है। एंड मोर यू कैन सी दैट इट इज अ वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, जैसे R को ओवर R में ले सकते हैं। बट ये वाली जो एग्जांपल मैंने लिखी थी ये थोड़ी सी डिफरेंट लिखी थी। यहाँ पे देखें R भी फील्ड है और C भी फील्ड है, बट if you multiply an element of ring with an element of C, so you will get generally an element of C. तो इसका मतलब कि यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो क्या है, वेल डिफाइंड है। Here scalar multiplication is well defined. So you just need so C over C भी हो सकती है। C over C is a vector space and C over R is a vector space, and both vector spaces are actually different. Their structures are different. मैं चले थोड़ा सा भी आगे जाऊंगा तो इसको बताने की कोशिश करूंगा कि इन दोनों वेक्टर स्पेसेस का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। No, it is just a vector space, Euclidean space. It is not a field. Rn is not a field. So Rn में क्या करनी है? इनवर्स एन के नहीं है ना, जैसे अगर आप कोऑर्डिनेट्स एन के ले रहे हैं तो अगर आप पॉइंट्स एन के ले रहे हैं तो ये यानी कि इशू यानी कि है ना। तो इन सेल्फ ये भी एक प्रॉब्लम यानी कि है कि आप मल्टीप्लिकेशन किस तरह से उनमें डिफाइन करवा सकते हैं। बहरहाल तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चले मैं इस वाली वेक्टर स्पेस को सी ओवर सी भी ले सकते हैं और सी ओवर आर भी ले सकते हैं। सी ओवर सी इज ऑल्सो, बिकॉज जनरली ये अगर ट्रू है तो इसका मतलब सी ओवर सी भी वेक्टर स्पेस है, आर ओवर आर भी वेक्टर स्पेस है। ओके, इन द सेम वे Q over Q भी एक वेक्टर स्पेस है, तो एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। इन द सेम वे C over C is also a vector space, but C is also a vector space over R. So that's why C could be considered as a module over itself, and it could also be considered as a module over R. Okay. अब जो नेक्स्ट बिग एग्जांपल जो हमें मिल रही है वो यानी कि है, जैसे हमने उसी चीज को जनरलाइज करेंगे that every that R is a module over itself, कि R को भी itself ही मॉड्यूल ले सकते हैं, that is R would be considered as an R module. इसको R मॉड्यूल के ऊपर कंसिडर कर सकते हैं कि हर रिंग को
And again, what is the point that here scalar multiplication is just the multiplication between elements of R. कि R के अपने elements के दरमियान, जैसे every field is a vector space over itself. In the same way, every commutative ring R with unity is a module over itself. So here again, scalar multiplication is a multiplication operation. Is a multiplication operation in R. It's mean that Z is a Z module. We can say that Z is a Z module. Q is a Z module. Zn is a Z module. हाँ, Q module. वैसे Q को यहाँ इज अ Q module. गुड. वैसे एक चीज हाँ यहाँ पे बता दूं, Q को वो भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा था ना, तो आप Q भी, बिकॉज हमें पता है कि Q एक एबिलियन ग्रुप है, that we know Q with respect to addition is an abelian group. That's why again using the same logic, in fact सारे के सारे, भले Q हो गया, R हो गया, in fact सारे के सारे, जैसे Q हो गया, R हो गया या C हो गया, ये सारे के सारे में पता है क्या है, एबिलियन ग्रुप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. तो ये ऑटोमेटिकली हमारा जो कंक्लूजन इम्प्लाई करेगा कि ये सारे के सारे जो मॉड्यूल्स होंगे Z होंगे. So it's mean that Q with respect to addition and scalar multiplication with respect to Z, R with respect to addition and scalar multiplication with respect to Z. In the same way, ये सारे के सारे क्या है? That is Q is a Z module. Q क्या है? Z module है. तो R को भी Z module assume कर सकते हैं. R is a Z module. तो ये मुझे इस वजह से याद आया कि नीचे जैसे हमने देखा कि जैसे Zn को हम Z मॉड्यूल भी बना सकते हैं, और जो हमारी थर्ड एग्जांपल थी, हम Zn को Zn मॉड्यूल ओवर इटसेल्फ भी बना सकते हैं. तो इसका मतलब कि Zn के ऊपर एटलीस्ट आपको दो मॉड्यूल स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं. देखिए Zn पहले हमें सेकंड एग्जांपल से पता चला दैट Zn is a Z module, and the third example shows that Zn could be considered as a module over itself, that Zn is also a Z module. Okay, there are two different kinds of module structures on Zn. Otherwise Zn तो अपने आप में से ग्रुप था या पहले रिंग था, अगर अब उसके बाद दो डिफरेंट मॉड्यूल स्ट्रक्चर्स आ गए, and I will show that why these two modules structures are different. Algebraically they would be different. तो चले इसको in the same way जैसे Q था, in the same way on Q, Q is a Z module. So this is an algebraic, this is a module structure on Q, and also we can define another module structure on Q because Q is a module over itself. So in the same way, so what is the remark that on M? So in the same way, आप R को as an R module ले सकते हैं, that R is an R module. C is a C module. अच्छा. So what is the remark that on an abelian group M, we can define different module structures. अच्छा, डिफरेंट मॉड्यूल स्ट्रक्चर्स हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं. एक तो हम रिंग ही डिफरेंट ले लें. एक तो बात मतलब ये होता है कि बाय टेकिंग डिफरेंट रिंग्स लेंगे तो डिफरेंट मॉड्यूल स्ट्रक्चर मिल जाएंगे.
और समटाइम्स आपने अगर वेक्टर स्पेस में देखा हो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी दूसरे तरीके से डिफाइन दे सकते हैं, और बाय डिफाइनिंग स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर आर इन अ डिफरेंट वे। जो सेकंड वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर मैं इतना कंसंट्रेट नहीं करूंगा, जिसको एक एग्जांपल के जरिए मैं इलस्ट्रेट कर देता हूँ कि लेट से आपने ये बात देखा होगा कि अगर R2 है, वेक्टर स्पेस में डिफाइन करा देता हूँ, तो इसका जो एलिमेंट्स है वो एक टिपिकल एलिमेंट का ए बी है। तो अगर आपको स्केलर मल्टीप्लाई डिफाइन करवाते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई हो जाता है, अल्फा ए इंटू अल्फा बी। अच्छा, ये एक तरह की स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो अंडर दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन R2 इज अ वेक्टर स्पेस। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हम डिफरेंट वे में डिफाइन करा सकते हैं, तो वो फिर हमें एक डिफरेंट वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो फॉर एग्जांपल लेट से आप ये चेक कर सकते हैं कि अल्फा को मैंने मल्टीप्लाई करवाया ए बी के साथ, और इसने आंसर बताऊं क्या दे दिया, इसने आंसर ये दे दिया अल्फा ए, और यहाँ पे 0 आंसर दे दिया। You can check, so you can check that R2 is also a vector space with respect to this scalar multiplication, but ये वो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगी जो पहले वाली वेक्टर स्पेस है, it would be a different vector space. So that's why तो ये इस तरह से कहना चाहिए कि मैं वो नहीं भी होती है, लेकिन अभी जो आपने रिजल्ट दिखाया कि R इज अ मॉड्यूल से, तो हम कैसे चेंज करें? क्योंकि मसला है कि जब मॉड्यूल आप डिफाइन करवाते हैं, चले आप ये कह रहे हैं जब मॉड्यूल डिफाइन कराते हैं तो एक रिंग के ऊपर डिफाइन कराते हैं ना, तो R के अकोमोडेटिव रिंग है ना। देखिए R, ये वाली चीज क्यों ट्रू है, ये वाली चीज वजह से ट्रू है बिकॉज ये R तो एक एबिलियन ग्रुप भी है, बिकॉज R रिंग है तो एबिलियन ग्रुप भी है, और यहाँ पे जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो रिंग के अपने एलिमेंट्स के दरमियान की मल्टीप्लिकेशन है, तो वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाती है जो हमने रिंग की लिखी हुई, जो मॉड्यूल की लिखी हुई है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ मॉड्यूल ओवर इटसेल्फ। तो ये ओवर आर मॉड्यूल्स की तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा if the scalar multiplication is the multiplication operation in R. ओके, तो इस वाली चीज के ऊपर मैं इतना जाऊंगा नहीं, बट तब भी ये एक डिफरेंट वे हो सकता है कि जाहिर सी बात है कि कि ये भी पॉसिबल हो सकता है ऑल्सो इन द केस ऑफ वेक्टर स्पेस कि आप वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड के ले रहे हो, बट आप डिफरेंट स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ लेंगे तो वो डिफरेंट वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर्स को इंड्यूस करेगा। बट हमारा जो अभी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ये रहेगी कि अगर मैं रिंग्स को डिफरेंट लेता हूँ, मॉड्यूल एम के ऊपर अगर मैं डिफरेंट रिंग्स लेता हूँ, तो वो किस तरह से मॉड्यूल के जो स्ट्रक्चर है उसको इफेक्ट करेगा। ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल which I want to discuss. That suppose R is a polynomial ring over R. So अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह से डिफाइन कर देते हैं बहुत सिंपली, दैट डिफाइन अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन with respect to R in this way, that if R is an element of ring and f of x it is equal to polynomial over R, that is all AIs are elements of R. तो R dot fx का मतलब क्या होगा कि R क्या होगा, पूरे की जो स्केलर है ये पूरे इनके साथ पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट इज इक्वल टू R a n x n up to so on R a naught, and we know that this is an element of R of x.
तो सिंपल जैसे हम स्केलर को पॉलीमल के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं उसी तरह से हमने इसको डिफाइन करवा दिया. So in this case we can say that so it implies that so under this scalar multiplication the Rx is an R module. So Rx is an R module. Although इसको ऊपर वाले किसी केसेस का भी स्पेशल केस कंसिडर करा जा सकता था, जैसे अगर kx अगर R फील्ड होता तो ये वेक्टर स्पेस होता है तो तब भी R मॉड्यूल हो जाता. बट ये किस मॉड्यूल को हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है, सो दैट्स वाई इसको मैंने अलग से डिफाइन करवा. ओके, वन मोर वे टू डिफाइन अ मॉड्यूल, जो जैसे हम ऊपर देखते रहे, अगेन ये एक जनरल एग्जांपल है और इसको हमने डिफरेंट जगहों पे देखा भी है. दैट इफ S is a subring of R, if S is a subring of R, then R is an S module. कैसे S module है? Because if you multiply an element of a subring with an element of a ring, then if you multiply an element of a ring with a क्योंकि अगर आप किसी S, अगर आपने एलिमेंट S से ले लिया और आपने इसको किसी R के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो जनरली आपको कहाँ पे एलिमेंट मिलेगा? S डॉट R किसके अंदर मिलेगा? R के अंदर मिलेगा. So under this scalar multiplication, so this is a scalar multiplication. So under this scalar multiplication, R could be considered as an S module. तो इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जैसे हमने C को देखा था. देखिए अब हमें बात पता है कि दैट R इज अ सबसेट ऑफ C. वैसे हम ये बात भी दे सकते हैं दैट सिंस C is an R vector space, so we can say that C is an R module. R is a subring of C. ये हमें बात पता है. So C is an R module. Also Q is a subring of C, so which implies that C is a Q module. In the same way, Z is a subring. Z is a subring over C, so it implies that C is a Z module. So at least जो ये वाली जो examples हैं, क्योंकि because C is a vector space over R, so that's why इसको first example से भी imply किया जा सकता था. And C is also an abelian group, so this could be implied by the second example. But now C could also be considered as a Q module. तो इसका मतलब हम different modular structures introduce करवा सकते हैं. In the same way, R के ऊपर भी आप ऐसे ही काम कर सकते हैं. For example, Q is a subset of R, so you can say that R is a Q module. More than subset, it is a subring. And C is a subring of R, so Z is a so R is a C module. पॉलीमॉर्फिक से केस में भी ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल we know that Z is a subset of Z of X, या R को जनरली R की बात कर लें जैसे हमने ऊपर किया था. अब R के ऊपर भी पॉसिबल हो सकता है that R of X is a module over itself. Rx is an R of X module because every ring is a module over itself. In the same way, since R is a subring of R of X, so it implies that this R of X is an R module.
So in this way, so using again this example, we can construct many examples of modules. कि अगर कोई सब रिंग लेके भी आप उसके ऊपर मॉड्यूल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. मॉड्यूल एवरी रिंग R of X रिंग है ना, तो एवरी रिंग कुड बी कंसिडर्ड एज अ मॉड्यूल ओवर इटसेल्फ. तो ये हमारी थर्ड एग्जांपल से आ रहा है कि whenever we can consider every ring. So आइडिया इसके अंदर यही था कि मैं आपको डिफरेंट बताना चाह रहा हूँ कि डिफरेंट किस तरह से हम एक सेट बिलियन ब्लॉक के ऊपर डिफरेंट मॉड्यूल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. So these are some different ways through which we can construct different modular structures. Okay, और ये examples मैंने आपको दिए. So next हमारे पास जब हम कभी भी एक स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं तो दैट्स वाई उसके सब स्ट्रक्चर का फिर कॉन्सेप्ट आता है. तो ये मैं आपको जैसे बात पूछे थे हेल्प करेंगे, तो दैट्स वाई आपने सब रिंग्स वाला पढ़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ आपको हेल्प करेगी. तो नेक्स्ट जो आइडिया है वो हमारे पास किसका है, सब मॉड्यूल्स का. So again, if M is an R module, so let's say if M is an R module, so if N is a subset of M, I think email तो कोई मरता हुआ गई है. अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने उसके बाद देखा वो सब जनरली पूरा टाइम टेबल शिफ्ट किया होगा. 8 से शुरू हो रहा है टाइम टेबल. एक क्लास नहीं, क्लास का टाइम 5 मिनट खत्म हो रहा है, जो गैप है कोई बात नहीं, क्लास रिकॉर्ड होगी. So if N is a subset of M, कि अगर N सबसेट हो M का, and N is also an R module, and N is also an R module, so we will say that N is a submodule. कि अगर अगर N भी एक R module हो, तो हम क्या बोलेंगे, that it is an R submodule. So it implies that so if N is a subset of N and N is an R module, so it implies that N is an R submodule of M. Okay, तो सब मॉड्यूल के लिए भी स्केलर्स का जो को कंसिडर करना पड़ता है, बिकॉज दैट्स वाई मैंने R सब मॉड्यूल का, मैंने सिर्फ सब मॉड्यूल लिखा, because if you are assuming that M is an R module, so we need to take some module also with respect to the R module structure. And how can we check that something is a submodule? It is like a subspace. So what would be the submodule test? So again, it should be an abelian group and scalar and because what is the condition that N should be an R module? So अगर N को itself एक R module होना है, so it should be an abelian group, and the second thing that the scalar multiplication should be defined on N. So अगर हमें abelian group check करना है, अगर N if N तो इसका मतलब अगर सब मॉड्यूल बनाने के लिए अगर मुझे abelian group चेक करना है तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? नहीं ऐसे वो तो सब है, मगर उसके लिए एक सिंगल कंडीशन होता है जो चेक कर लेता है, जो सब ग्रुप टेस्ट a minus b plus 1. So actually ये एक R सब मॉड्यूल तब होगा if N is the R सब मॉड्यूल of M. तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है कि N abelian ग्रुप होना चाहिए with respect to addition. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मुझे क्या चेक करना है कि for all x y in N, x minus y should be N. Okay, and next we need to show that the scalar multiplication should be defined
and the properties would hold with respect to the scalar multiplication. So now class just try to check that if the scalar multiplication is well defined on M, then all the properties will hold automatically, because जितनी भी properties जो हैं R modules की, ये सारी की सारी properties क्या hereditary properties हैं. ये सारी की सारी properties जो मैंने यहाँ पे define कराई थी. So all these properties are hereditary properties. So if the n is closed under multiplication, then all these properties will be satisfied automatically, because all these properties are hereditary properties, because वो m में hold कर रही हैं, तो और if n is closed under scalar multiplication, तो automatically n में भी hold करते हैं. So that's why we just need to check that n is closed under multiplication. That is, for all r in R and for all x in N, Rx should be an element of N. So if these two properties are okay, then we will say that N is an R. N is an R submodule, or N is an R submodule of M. Okay. So I'm now using these two steps. We will check or we will try to compute submodules of a given module. n का सबरिंग होना जरूरी तो नहीं है ना? नहीं, n का सबरिंग होना जरूरी नहीं है. n का सबरिंग होना जरूरी है. हाँ, सब ग्रुप होना जरूरी है. सब ग्रुप होना जरूरी है. अच्छा, इसके एग्जांपल्स देखते हैं. और हम एग्जांपल्स में ये देखेंगे कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लेने से चीज़ें किस तरह से डिफरेंट होगी. अच्छा, एग्जांपल्स में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे. हमारी पहली एग्जांपल जो थी वेक्टर स्पेस वाली एग्जांपल. सो लेट V be a vector space over K that is V be a K मॉड्यूल. ओके, हमने V को K मॉड्यूल ले लिया. तो इस केस में K सब मॉड्यूल्स कौन से होंगे वेक्टर स्पेस के? अगर जो मॉड्यूल है वो वेक्टर स्पेस है, तो सब इन दिस केस यस, बिकॉज अगर आपको याद हो कि वो जो सब मॉड्यूल की डेफिनेशन सब स्पेस वाली है, सो इन दिस केस सब मॉड्यूल्स आर और K सब मॉड्यूल्स आर K submodules of V are subspaces of V. उसकी सब स्पेसेस निकाल देते. ओके, क्योंकि सब स्पेस की प्रॉपर्टी होती है. तो इस केस में we can in this case we can easily classify submodules because all subspaces are submodules. तो अब आपको मालूम होना चाहिए इसमें सब स्पेसेस कैसे निकलती है. चले स्पेसिफिक कर लेंगे. चले C over C भी कर लेते हैं, C over R भी कर लेते हैं. Because now we know that C is a vector space. C is a vector space over C. तो सब स्पेस आप इसकी कोई बताएं. असल में इसको इस वाले केस को थोड़ा सा मैं आगे ले आना चाह रहा था, बिकॉज इस केस में मैं बताता कि कौन से C इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R करने में. C नहीं करें. C के केस में भी आप R नहीं है, R सब स्पेस नहीं है, क्योंकि R क्लोज नहीं है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन. R के एलिमेंट को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो R के अंदर नहीं है. इस केस को मैं अभी आता हूँ ना कि C इज अ वेक्टर स्पेस कहेंगे जब कभी भी रिंग को इटसेल्फ मॉड्यूल कंसीडर करते हैं, दैट व्हिच काइंड ऑफ थिंग्स आर सब मॉड्यूल्स. अभी आता है, वेट मिनट हो जाए, वहां पर आ जाएगा. अभी मैं सिर्फ वेक्टर स्पेस वाले केस को हैंडल कर रहा हूँ. C ओवर C वाले केस को मैं उस केस में हैंडल करूंगा व्हेन आई विल डिस्कस सब मॉड्यूल्स
of submodules of R, where R is considered as a module over itself. So in this case में आप R को भी ले सकती हैं, इवन आप इस केस में सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स को भी ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास इस टाइप की सब स्पेस भी हो सकती है कि आपके बहुत सारे अल्फा आई टाइप की चीज़ें और अल्फा इज एन एलिमेंट ऑफ आर. सो दिस इज अ सब स्पेस. इसी तरह आर को भी इटसेल्फ सब आर को भी सब स्पेस कंसिडर कर सकते हैं. इसको असल में नोटेशन अक्सर बुक्स वगैरह में ये लिखी होती है, आई आर लिखी होगी, इसकी नोटेशन आई आर लिखी होगी. इसी तरह आर को भी सब स्पेस कंसिडर कर या तो इसको कंसिडर कर सकते हैं दैट इट इज एन आर सब मॉड्यूल, दैट दिस इज एन आर सब मॉड्यूल of C. In the same way, R is also an R submodule of C. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल अब करना. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या थी दैट let G be an we know that G be an abelian group. So we can consider G as a module over Z. So we can consider G as a G as a Z module. अब इस केस में सब मॉड्यूल्स क्या होंगे? इस केस में सब मॉड्यूल्स क्या होंगे? यानी जी एबिलियन ग्रुप था तो उसको जी मॉड्यूल कंसिडर कर लिया, तो जी के कौन से सब स्ट्रक्चर्स सब मॉड्यूल्स होंगे? सब रिंग्स या सब सब ग्रुप्स? ऑल सब ग्रुप्स. एक्चुअली एनी subgroup of G is a Z module, because सबग्रुप जो है वो मॉड्यूल के लिए सब ग्रुप होना जरूरी है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज होना जरूरी है. सो अगेन अगर सब ग्रुप तो ये ऑलरेडी है तो और इट वुड बी क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐड करके डिफाइन करवाई जाती है आफ्टर एडिंग एलिमेंट्स. सो again G is a subgroup, so it would be close under addition, so that's why it would be close under scalar multiplication. So any subgroup is a Z submodule of a Z module of a Z module G. So इस केस में आप ये बात कह सकते हैं कि अगर इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल देखना चाह रहा नहीं, जैसे Zn आपने ले लिया, we know that Zn is a Z मॉड्यूल. अब हमें Zn के हमें सब या इन पर्टिकुलर चले आपने ले लिया Z6 आपने ले लिया, तो Z6 इज अ Z मॉड्यूल. तो हमें इसके सब ग्रुप्स के बारे में पता है. We know that 0, 3 and 0, 2, 4 these are subgroups. These are subgroups of Z6. Therefore ये दोनों क्या होंगे? सब मॉड्यूल्स भी होंगे. और Z सब मॉड्यूल्स. Z6 ओके, दैट्स फाइन. अब हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चले आते हैं. Let R be an R module. Let R be an R module. So in this case सब मॉड्यूल्स क्या होंगे? इसको देखने की कोशिश करना. Okay, something is a sub module. So अगर कोई चीज सब मॉड्यूल होगी R में,
So there should be two things. It should be closed. It should be a subgroup. It should be a subgroup. नहीं नहीं, और close under scalar multiplication. Subgroup और plus close under scalar multiplication. अभी आपको समझ में आ जाएगा कि n क्या होना चाहिए. अगर सब ग्रुप है तो क्या कंडीशन होके करेगी कि x माइनस वाई इट इज इक्वल टू n और ऑल एक्स वाई इन n. और क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो इसका मतलब क्या है कि मैं, क्योंकि रिंग है ना, तो अगर मैं रिंग के किसी भी एलिमेंट को अगर n के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो कहाँ का एलिमेंट मिलना चाहिए, n का एलिमेंट. अब आप इन दो प्रॉपर्टीज को और से देंगे कि किस चीज की प्रॉपर्टीज है. यस, so actually n should be an ideal. Ideal किए ना तो n should be an ideal. So that is n is an ideal of R. So in this case, so R submodules of R are ideals of R. कि जितने भी R ideals of R. तभी हमने जब ये केस देखा था, ये वाला केस, हमने इस वाले केस को स्पेसिफिकली जब हम डिस्कस करना चाह रहे थे दैट C इज अ C मॉड्यूल, तो C के आइडियल कौन कौन से होते हैं. ये तो मालूम होना चाहिए. फील्ड के कितने कौन कौन से प्रॉपर आइडियल्स होते हैं. क्या फील्ड के प्रॉपर आइडियल कौन से होते हैं. जीरो और इटसेल्फ. बस जीरो या तो इटसेल्फ, जीरो ही होता है ना, इसके अलावा खुद होता है ना, तो प्रॉपर का मतलब से जीरो ही है ना. तो इसका मतलब अगर मैं प्रॉपर सब मॉड्यूल्स की बात करूं तो वो सिर्फ क्या होगा, जीरो होगा और कुछ नहीं होगा. ओके, इन द सेम वे आर को और आर कह सकते हैं. अगर आपने Cn को ओवर Cn लिया, Cn को so if Cn is a Cn modules, तो इस केस में सब मॉड्यूल्स क्या होंगे, आइडियल्स हो जाएंगे. तो अगेन जो इसके आइडियल्स क्या होते हैं वो हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं. या Z6 को आपने Z6 ले लिया तो अगेन इसमें जो आइडियल्स जो होते हैं वो आइडियल्स ही होते हैं, 0 2 4 एंड 0 3. गाउसियन इंटीजर्स को आप Z मॉड्यूल Z दोनों मॉड्यूल अज्यूम कर सकते हैं. अगर आपने गाउसियन इंटीजर्स को लिया है, Z आयोटा को अगर मॉड्यूल इटसेल्फ ही है, Z आयोटा इज अ Z आयोटा मॉड्यूल्स, तो अगेन इसमें सब मॉड्यूल्स क्या होंगे, आइडियल्स होंगे. हाँ, इसके जो अगेन अगर डिपेंड ये करते हैं, इसको आप Z मॉड्यूल भी कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, गाउसियन इंटीजर्स को आप यहाँ पे भी लेकर आ सकते हैं. तो मैं भी चले गाउसियन इंटीजर में फर्क दिखा दूंगी. गाउसियन इंटीजर्स को आप यहाँ पे भी लेकर आ सकते हैं कि हर सब ग्रुप्स है. तो यहाँ पे भी अगर गाउसियन इंटीजर को Z मॉड्यूल कंसिडर करेंगे तो इफ Z आयोटा इज अ Z मॉड्यूल, तो जितने सब ग्रुप्स हैं वो सब मॉड्यूल्स हो जाएंगे. बट अगर Z आयोटा इज अ Z आयोटा मॉड्यूल है तो जितने आइडियल्स हैं वो सब मॉड्यूल्स होंगे. तो Z आयोटा इज अ Z मॉड्यूल, तो अगेन सब मॉड्यूल्स क्या होंगे, आइडियल्स होंगे. हाँ सब, ये तो जनरली मैंने कहा ना कि अगर R को मैंने कहा कि R सब मॉड्यूल्स ऑफ R आर आइडियल्स ऑफ R, तो ये हमारा कंक्लूजन है. ये तो जस्ट इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल लेके आओ. तो अगर आपको आइडियल्स के बारे में पता है तो तमाम आइडियल सब मॉड्यूल्स होंगे, वो सब मॉड्यूल्स. अगर इफ यू आर कंसीडरिंग पॉलीमर रिंग एज अ मॉड्यूल ओवर इटसेल्फ, so actually this is under this example that if you are considering R as a module over itself, so if you are considering R as a module of itself, so in this case R submodules of R are ideals of R, not in general in this case. और जो हम लोगों ने, अच्छा ये आइडियल वाला केस हमने डिस्कस कर दिया, ये वाला केस ये हो गया, वेक्टर स्पेस वाला भी हो गया.
ओके, और हमने हाँ एक सब रिंग वाला फिर उस वाले देखना पड़ेगा। हाँ पॉलीमर रिंग में इट डिपेंड्स कि अगेन कि वो जो पॉलीमर वाला जो स्पेसिफिक एग्जांपल दे दी, तो अगेन इट डिपेंड्स कि अगर पॉलीमर रिंग ओवर इटसेल्फ ले रहे हैं तो ऑल आइडियल्स आर कि इट पॉलीमर्स वाले में भी केसेस हो जाएंगे। For example, if Rx is an Rx modules, तो इस केस में हमें बताया कि हर एक आइडियल जो प्रिंसिपल आइडियल होता है इनके किसी एक पॉलीमर से जनरेट हो रहा होता है, सो इट इज एन आइडियल ऑफ R of x, so also it is an R of x module, okay? बट अगर मैंने इसके ऊपर डिफरेंट स्ट्रक्चर ले लिया कि अगर मैंने R of x को मैंने R मॉड्यूल ले लिया, तब बहुत सारी ऐसी चीजें भी आ सकती हैं अपार्ट फ्रॉम आइडियल्स, कि आइडियल्स के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं R को ले लूँ कि R इज अ सबसेट ऑफ दिस थिंग इज एन R मॉड्यूल, ये भी क्या होगा, एक R मॉड्यूल ही होगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि मॉड्यूल्स होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, तो मैं आपको आगे कंपैरिजन ही करके बताऊंगा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए कि जब मैं रिंग्स को डिफरेंट ले लेता हूँ तो कैसे जो मॉड्यूल्स हैं उनकी सब मॉड्यूल्स के स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो सकते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको नज़र आ रहा है कि ये जो R था, इसको अगर मैं RX मॉड्यूल लेता, हाँ अगर मैं इसको RX मॉड्यूल लेता तब देन दिस थिंग and then this thing is not an a sub module. अगर मैं RX को RX मॉड्यूल कंसिडर करूंगा then R is not a sub module because R is not under close scalar multiplication. तो पॉलीमर को स्केलर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा. So here try to check that R is not an RX, यहाँ पे सब मॉड्यूल आप करा दें. इस चीज को देखें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. इट्स नॉट एन RX सब मॉड्यूल. अच्छा मैं इस वाले एग्जांपल के ऊपर आता हूँ, पहले मैं एक और एग्जांपल कुछ और एग्जांपल क्लियर कर दूं, फिर मैं इस एग्जांपल के ऊपर आऊँगा. पहले कुछ आसान से एग्जांपल ले लें. फॉर एग्जांपल आप R के ऊपर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ले लें, 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ले लें R के ऊपर. वी नो दैट R is an R module. R is a Q module because subring है, and R is a C module. अब हर केस में हम सब मॉड्यूल्स निकालने की कोशिश करते हैं. अच्छा इस केस में सब मॉड्यूल्स क्या होंगे, आइडियल्स होंगे. अब R के आइडियल्स क्या है, सिर्फ वो 0 ही है ना, फील्ड है, तो सिर्फ सब मॉड्यूल क्या होगा, प्रॉपर सब मॉड्यूल सिर्फ 0 होगा. बट अगर मैं Q के ऊपर आऊंगा तो देखें 0 तो हो ही सकता है, 0 के अलावा और भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से Q भी हो सकता है, Q भी तो सब मॉड्यूल्स होता है. अगर मैं इसके सब मॉड्यूल्स अगर कंप्यूट करने पर हूँ, यहाँ पे मैं सब मॉड्यूल्स निकालूं तो सिर्फ एक ही सब मॉड्यूल्स मिलेगा. यहाँ पे सब मॉड्यूल्स निकालूं तो आपको बहुत सारे सब मॉड्यूल्स नजर आ रहे होंगे. आपको Q भी नजर आ रहा होगा. इनफैक्ट अगर आपको Q√2 भी नजर आ रहा होगा, दैट Q√2 is a subset of R and it is a Q सब मॉड्यूल. ये सारे सबसेट हैं R के और ये इसके Q सब मॉड्यूल्स हैं. तो आप यहाँ पे बात कह सकते हैं कि here you are looking for R sub modules, here you are looking for R sub modules of R, here you are looking for Q sub modules of R, and here you are looking for Z sub modules of R. तो देखें इधर लिस्ट काफी बड़ी हो गई, इधर सिर्फ एक ही सब मॉड्यूल था, मगर जैसे ही अब आपने स्केलर्स क्यूब्स आना शुरू हो गए तो सब मॉड्यूल्स क्या हो गए, इंक्रीज यानी कि होना शुरू यानी कि. और इसके अलावा और भी कई एग्जांपल्स आप बना सकते. अब जी में देखें, जी में 0 भी है, नहीं Zn कहाँ से आ गया, Zn तो सबसेट थोड़ी होगा R का. Q भी है,
Q √2 भी है, बट आप देख सकते हैं कि Z भी है। अच्छा, ये जो Z है ये यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे सब मॉड्यूल नहीं है, क्योंकि स्केलर्स कहाँ से आ रहे हैं, Q में से आ रहे हैं ना, स्केलर्स Q में से आ रहे हैं। तो क्या Z इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन? तो Z स्केलर मल्टीप्लिकेशन द क्लोज नहीं है, तो दैट्स व्हाई Z is not, so you can say that Z is not a Q submodule of, Z is not a Q submodule of R. Although Z is a Z submodule of R, but Z is not a Q submodule of R. In the same way, here you can say that Q is not an R submodule of R. Q is not an R submodule of R. तो जब मैं इसका मतलब सब मॉड्यूल लेने में से बड़ा स्ट्रक्चर नहीं, जो M की सिर्फ खासियत नहीं है, यू नीड टू सी द सेट ऑफ स्केलर्स के सेट ऑफ स्केलर्स क्या है। सो किसी चीज का सब मॉड्यूल होना या ना होना सेट ऑफ स्केलर्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। अब देखिए, मैंने रिंग M एक ही ले लिया था कि सब केसेस में M क्या था, R के इक्वल था। इन ऑल केसेस M इट इज इक्वल टू R, बट इन द फर्स्ट केस द सेट ऑफ स्केलर्स is equal to R. In the second, the set of scalars is equal to R. In the second case, the set of scalars is equal to Q. And in the third case, the set of scalars is equal to Z. अच्छा, इस केस में ये सब मॉड्यूल होगा, और भी आप बहुत सारी लिस्ट बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर M को आप R मॉड्यूल ले रहे हैं या M को Q मॉड्यूल ले रहे हैं और M को Z मॉड्यूल ले रहे हैं, तो तीनों मॉड्यूल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्योंकि इनके सब मॉड्यूल से डिफरेंट है। तो ये एक डिफरेंट सब मॉड्यूल स्ट्रक्चर है। नहीं, दैट से बात है कि अभी ये तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल है, तो आप हाँ ये आप कह सकते हैं कि अब आर के ऊपर समटाइम्स हम बहुत सारे और डिफरेंट भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आर के सब सेट के साथ ही बना सकते हैं, हम कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी बना सकते हैं कि आर को किसी और रिंग के ऊपर भी बना सकते हैं जो आर का सबसेट में। तो इस तरह से आप मिनिमल निकालने की तरफ यानी कि ना जाए, क्योंकि यहाँ पे इत्तेफाकियत है आर के सबसेट्स की हेल्प से हमने इसको सब मॉड्यूल फॉर्म किया हुआ है, बट इट इज नॉट नेसेसरी। प्रॉब्ली at least I know an example कि you can make R as a module over different ring. So actually this is a specific example just shows you कि ring different लेने से underlying different लेने से module structures कैसे different हो जाते हैं। Okay? तो टाइम हो गया लेक्चर? जी सर, काफी आगे चलते हैं। ये लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा प्लीज। अच्छा जो ये कर दे। तो रिटन नोट्स की बात कर रहा हूँ। जी दोनों अपलोड कर दूंगा।